Today we have to continue our paper molecular biology and this is your lecture number 13. Ajir our lecture re discussion karma kahar babod re that is about the tRNA. Last किछिटा क्लास रे हमें mRNA बाबद रे डिस्कशन करथिला, RNA बाबद रे डिस्कशन करथिला, डिटेल्स मनकर बाबद रे डिस्कशन करथिला. आज हमें डिस्कशन करमा kahar बाबद रे that is about the tRNA बाबद रे डिस्कशन करमा. Okay, tRNA माने कना that is the transfer RNA. tRNA माने कना that is your transfer RNA एने तक transfer RNA बोली कि कहां जे कहउछु तार बाबद रे भी हमें डिस्कशन transfer RNA. Okay, or this is your tRNA. Right? Why it is called as transfer RNA? Okay, because tRNA रो काम करा. tRNA that bring the amino acid towards the protein synthesis site. जिन जगह protein synthesis होचे, किन जगह protein synthesis होचे? Cytoplasm रे mRNA होचे and mRNA that is having the information for the protein. ओटे हमर mRNA होचे, suppose this one that is our mRNA होचे. इडा हला हमर mRNA होचे. mRNA पाखे information होचे for the protein synthesis. तो mRNA निके हमर tRNA, suppose this one that is the tRNA, it is just looking like this. तार structure बाबद रे हम आज डिस्कस करमा. tRNA कहा के कैरी करी करी अनबा that will bring the amino acid. कहा के नहीं करी असबा amino acid. This one that is the amino acid, and this one that is your tRNA. tRNA will bring the amino acid. Any amino acid के अनबा केन के mRNA नहीं के अनबा. Because mRNA रे काना अच्छे mRNA रे किसी sequence माने अच्छे तीनटा nucleotides वाला sequence माने अच्छे 3 nucleotides वाला sequence इमान को कहा जैसे काम लिखरी कोडन बलिकरी कहा जैसे सपोज इस जगह रे अच्छे AUG GAG CAC इटा माने हमर काना है कोडन्स माने डिस्कशन कर्मा कोडन कहा के क्वेश्चन फिर अपकमिंग क्लासेस. ओके इटा मान को तीन टा nucleotides मान को हमें काना क्वेश्चन कोडन बलिकरी that is present on the mRNA. तो tRNA रो काम हला जे एमिनो एसिड का आने करी केन के ट्रांसफर करो छे एमिनो एसिड के आने करी ट्रांसफर करो छे टू द कोडन्स ऑन द mRNA. ओके mRNA रे जन कोडन अछि से जागा के कहा के नहीं करी आसु छे tRNA के नहीं करी आसु छे, सॉरी एमिनो एसिड के नहीं करी आसु छे tRNA. ओके सो दैट जेहेतु ट्रांसफर करो छे एनी जागा के हमें काना कहि परमा दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस साइट बोली करी कहि परमा. Okay, this is your site of protein synthesis. जिन जगह रे प्रोटीन सिंथेसिस होचे से जगह के एमिनो एसिड के नहीं करी आसबार काम का हर दैट इज द tRNA. तो tRNA आसी करी mRNA रो केनो नहीं करी सदा के ट्रांसफर करो छे कोडन्स नि के आनी करी सदा के पुट करो छे. ओके सो tRNA bring the amino acid. We can write this tRNA bring आनी करी असला bring the amino acid. Okay, to the codons on mRNA. Okay, mRNA रो codons निके आने करी ट्रांसफर कराला आने करी असला कहा के आने करी असला amino acid के आने करी असला so that this is called as what tRNA. And last class जेते बेला में डिस्कशन करतला different types of RNA गोटे क्लास रे तेरा मैं डिस्कशन करथिमा सबुतु स्मॉलेस्ट RNA होचे केनटा दैट इज द tRNA. ओके सो tRNA दैट आर द स्मॉलेस्ट RNA. tRNA is the smallest RNA. Okay, approximately जी देखमा tRNA रे गोटे tRNA that is having 75 to 93 nucleotides. केतेटा न्यूक्लियोटाइड्स होचे ओनली 75 to 93 भितरे हमर रहउचे न्यूक्लियोटाइड्स रो नंबर टोटल tRNA रे. सो दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट RNA बोली के हमें कंसीडर करि परमा कहा के tRNA के एंड tRNA के क्वेश्चन सोल्यूबल RNA बोली के भी क्वेश्चन का RNA कहा जैसे आल्सो कॉल्ड सोल्यूबल RNA, also called as soluble RNA. Why it is called as soluble RNA? Because this is soluble in NaCl.
soluble in sodium chloride. ओके सो दैट जेहेतु soluble है एतिर लगी तके sRNA बोली करी भी कहा जासी. ओके इधर बाबत रे मैं आगुरी डिस्कशन करी सारी थिला. दिस इज वेरी स्मॉल एंड लास्ट क्लास रे मैं जेते बेले डिस्कशन करथला राइबोसोमल आरएनए से टाइम रे सरकर डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए आर देयर. 16S rRNA, 23S rRNA, 5S rRNA, 5.8S rRNA, 28S rRNA. सुनो सब आरएनए रो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बाहर करथला जे सेंट्रीफ्यूगेशन कला टाइम रे हाउ स्पीड or how faster, how quicker their sediment at the bottom of the test tube during the time of centrifugation. तो करूछ केते स्पीड रे गुटे पर्टिकुलर सब्सटेंस ता सेंट्रीफ्यूगेशन टाइम रे सेटल डाउन होचे सेटा हमें डिस्कशन करिथिना है ना. सेंता हमर जदि टीआरएनए रो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट देखमा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट of tRNA रो sedimentation coefficient केते that is only 4s. This is only 4s. No question as tRNA रो sedimentation coefficient केते only 4s. 4 into 10 to the minus 13 second. इतनी slow जाइकरी से काना करबा that will settle down at the bottom. It will take 4 into 10 to the minus 13 second. 4 into 10 to the power minus 13 second. Ita tar hoche kana? That is the speed. You can say that this is a kind of speed. Okay, due to the centrifugal force, it will settle down in this way. Very slow रे जाइकरी से settle down होगा. Okay, इटा गला हमर kana? That is the general idea about our tRNA. एबे देखो हमें tRNA रो 2D structure. 2D structure of the tRNA. tRNA रो 2D structure और 2-dimensional structure हमें जितने देखो जो 2-dimensional structure of the your tRNA that was given by one of the biologists ताकर ना है ना होले. tRNA रो 2D structure के देथिले होले देथिले. Okay, this structure that was given by होले. Given by the biologist ताकर ना है ना होले. ओके कोलेजन मॉडल देथिले 2D स्ट्रक्चर और 2D मॉडल बोली करी कहि पारमा. दिस इज द मॉडल दैट वाज गिवन बाय बोले 2D मॉडल हमें जेतेले देखुछु 2D मॉडल दिस मॉडल इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल. तो मॉडल के काना कहा जैसे दैट इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल. हमर जदी क्लोवर लीफ देखमा गुटे लीफ अछि गुटे प्लांट लीफ तो क्लोवर लीफ जो देखमा इट इज जस्ट लुकिंग लाइक दिस. तो क्लोवर लीफ ता जदी हमें देखमा एंता दिस. ओके तो क्लोवर लीफ संगे हमर टीआरएनए रो स्ट्रक्चर के काना करा है कंपेयर करा है. देखमा टिके गले हमें टीआरएनए रो स्ट्रक्चर देखमा क्लोवर लीफ संगे ताके कंपेयर करा है बोली करी ताके क्लोवर लीफ मॉडल बोली करी कहा जैसे. ओके सेति लगे हमें देखे क्लोवर लीफ मॉडल बोली करी कहू दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट होले. तो क्लोवर लीफ मॉडल काना कहूचे देखो जे हमर टीआरएनए जेतले देखुछु टीआरएनए रे काना हितसी देखो टीआरएनए रे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फॉर्मेशन ऑफ इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स काना कहला. लेट्स सी दिस व्हाट इज दैट इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड. टीआरएनए रे काना हितसी कहला इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड. इंट्रास्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड माने काना देखो सपोज धरि न दिस वन दैट इज द आरएनए हला. दिस वन दैट इज द आरएनए हला एंड सपोज मैं जगह रे गोटे सीक्वेंस बना ली. सपोज धरि न सी 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 जी 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 एंड हियर दिस वन दैट इज योर जी 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 सी 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 माने कर सीक्वेंस अछि. तो देखमा दिस सी टा हमर जदी ई सी देखमा ई सी टा कहार संगे कॉम्प्लीमेंटरी है ई जी संगे कॉम्प्लीमेंटरी. दिस सी इज आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी विद दिस जी. दिस इज आल्सो कॉम्प्लीमेंटरी विद दिस. दिस जी इज कॉम्प्लीमेंटरी विद सी. दिस विल कॉम्प्लीमेंटरी विद दिस.
यू नो ई सीटा ई जी संगे कॉम्प्लीमेंटरी है, ई सीटा ई जी संगे कॉम्प्लीमेंटरी है, ई सीटा ई जी संगे कॉम्प्लीमेंटरी है। तो हमर आरएनए जतले देखुछु आरएनए जदी काणा ही परलो जेतु सेटा सिंगल स्ट्रैंडेड है, आरएनए काणा हबार चांसेस है बैंड ही जिबार चांसेस। ओके बिकॉज़ आरएनए दैट इज वेरी रिएक्टिव बिकॉज़ तार नाइट्रोजनस बेस माने जतले देखमा माने कार्य संगे बेस पेयरिंग नाही करी। तो सेम स्ट्रैंड रो भितरे बेस पेयरिंग हे जिबार चांसेस अछि। ई सीटा इतार संगे जदी हमर एटा के जस्ट टिके हमें काणा कला देखो जदी जस्ट काणा ही गला जस्ट बैंड ही गला तो हाउ व्हाट विल हैपन जदी बैंड ही गला काणा हबा लेट्स सी हमर इनो काणा थिला सी 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 ओके देन जी जी एंड ई जी ई साइड देखो इटा इटा हला मनकर 3 प्राइम इटा हला मनकर 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम रे काणा আছে जी 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 मनकर भितरे काणा हबा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ओके बिकॉज जेन जेन जगह रे इटा हमर काणा इटा माने हमर कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंटरी माने काणा ए ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी ऑलवेज पेयर विथ सी ए रो कॉम्प्लीमेंटरी होचे टी एंड जी रो कॉम्प्लीमेंटरी होचे सी तो इनो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस पावर द्वारा आरएनए काणा करि पारे तार निजर स्ट्रैंड रो भितरे भी काणा फॉर्मेशन कर दे पारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे पारे ओके इतके कहूचो इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा स्ट्रैंड माने काणा सेम स्ट्रैंड रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होला इंट्रा स्ट्रैंड माने काणा हाइड्रोजन बॉन्ड्स formed in same strand in same सही स्ट्रैंड रे गुटे स्ट्रैंड रे हाइड्रोजन बॉन्ड लिखैছে कि अलग अलग स्ट्रैंड আছে हमर गुटे ही स्ट्रैंड तो हम नै छु ना तो गुटे स्ट्रैंड रे जदी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होला बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस ताके कहमा इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड पर डीएनए रे काना होतला डीएनए रे इटा गुटे स्ट्रैंड हला इटा गुटे स्ट्रैंड हला अलग अलग दुटा स्ट्रैंड थिला समानकर भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन पहले इटा गुटे स्ट्रैंड अलग अलग स्ट्रैंड भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हले ताके कहमा इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड ताके कहमा इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड ओके बट हियर सेम स्ट्रैंड रे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हला तो इताके कहमा काम बोले कि इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड ओके इंटर एंड इंट्रा दुटा वर्ड सेम स्ट्रैंड रे जदी फॉर्मेशन हितबा तो इंट्रा अलग अलग स्ट्रैंड रे फॉर्मेशन हितले इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें केनो देखबार के पाउछो डीएनए केस रे बट इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड केनो देखबार के पाउछो हमर आरएनए केस रे दैट इज सीन इन केस ऑफ टीआरएनए केस ओके ओके एबे देखो एटा तो इंटरस्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड काना बुझी पाला टीआरएनए रे इंटरस्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हेतसे केनता हेतसे फिर देखना इनो जेन रीजन रहला इटा कैन रीजन रहला पेयर्ड रीजन रहला इटा कैन रीजन रहला पेयर्ड रीजन माने हाइड्रोजन बॉन्ड बेस पेयरिंग हेचे सेते लगे तके कैन रीजन कहि परमा पेयर्ड रीजन बोली कि कहि एंड जेन रीजन रे पेयरिंग नाही दैट मींस ई रीजन रे किछि सीक्वेंस अछन जे मानकर भीतर कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस नाही न इनो जेन सीक्वेंस अछि ना कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस नाही न सेते लगे मानकर भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नाही है राइट तो ई जेन रीजन रहला जेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नाही है ताके कहला अनपेयर्ड रीजन देखे कहला अनपेयर्ड रीजन पेयरिंग नाही है सेते लगे ताके कहला अनपेयर्ड रीजन एंड अनपेयर्ड रीजन हमें जितले देखमा अनपेयर्ड रीजन इतके कहि परमा हमें काम बोली करी लूप बोली करी कहमा इतके काना कहमा लूप अनपेयर्ड रीजन के हमें काना कहमा लूप एंड देन पेयर्ड रीजन रहला इतके कहमा स्टेम इतके काना कह जैसे स्टेम बोली करी कह बुझी पालो
जन जगह पेयरिंग हितबा ताके कहमा स्टेम एंड जन जगह पेयरिंग नहीं हितबा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हितबा से रीजन के कहमा अनपेयर्ड रीजन दैट इज कॉल्ड एज लूप बोली करी कह ओके एंड टोटल पेयर एंड अनपेयर्ड रीजन मिसै करी टोटल टाके हमें काना कहि परमा टोटल टाके आर्म बोली करी कहि पर टोटल टाके काना कहमा आर्म बोली करी ओके पेयर्ड रीजन के कहला में काम बोली करी स्टेम अनपेयर्ड रीजन के कहला काम बोली करी लूप स्टेम और लूप मिसै करी हमें काना कहला आर्म ओके लेट मी राइट हियर पेयर्ड रीजन के कहला स्टेम अनपेयर्ड रीजन के कहला लूप ओके पेयर्ड एंड अनपेयर्ड रीजन दुईटा के मिसै करी हमें एते के काना कहउछु आर्म बोली करी कहि पार तमे टीआरएनए जेतेले देखमा क्लोवर लीफ मॉडल टीआरएनए रे पांचटा डिफरेंट आर्म्स प्रेजेंट थिसी ओके सो टीआरएनए you see the structure of the tRNA or the 2D model जेतेले देखमा tRNA have 5 different arms ओके किछटा आर्म रे लूप एब्सेंट भी थाई पारे हला डिस्कशन करमा तार बाबत टीआरएनए पाके पांचटा आर्म अछि से पांचटा आर्म के हम यदि देखमा द फर्स्ट आर्म जाके कोस हमें एक्सेप्टर आर्म बोली करी कहसु पहला नाम मन लिखि दो कहा के काना कहसु एक्सेप्टर आर्म दुई नंबर हला दैट इज योर एंटीकोडन आर्म तीन नंबर दैट इज DHU arm and the fourth one that is the TC arm and the fifth one that is DHU arm okay so पांचटा different arm अछि हमर केनो that is in case of pure tRNA तो पांचटा आर्म वन बाय वन डिस्कशन करतेल जमा डायग्राम काटतेल जमा ओके फर्स्ट आर्म जहा के कहू हमें एक्सेप्टर आर्म ओके एक्सेप्टर आर्म ऑफ द tRNA जेतेले देखु छु ओके लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA हियर एक्सेप्टर आर्म जेतेले देखमा एक्सेप्टर आर्म रे काना थिसी देखो गोटे पेयर्ड रीजन अछि ओके एंड दुईटा एंड अच्छे तार पाखे गोटे एंड हला 5 प्राइम एंड आ गोटे हला 3 प्राइम ओके गोटे हला 5 प्राइम एंड आ गोटे हला 3 प्राइम एंड हमर जन 3 प्राइम एंड अच्छे इस जगह रे काला अच्छे गोटे अनपेयर्ड रीजन अच्छे दैट इज सी ए ओके देखो एंड इन गोटे पेयर्ड रीजन अच्छे एंड जन पेयर्ड रीजन अच्छे से पेयर्ड रीजन रे पाखा पाखी पेयर्ड रीजन रे पाखा पाखी 7 to 9 न्यूक्लियोटाइड्स ओके देखो दुईटा एंड अच्छे एक्सेप्टर आर्म रो जे देखमा एक्सेप्टर आर्म रे इट हैज टू एंड्स ओके आरएन रो दुई एंड्स अच्छे कने कने एंड अच्छे 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड जेतेले हमें देखमा 5 प्राइम एंड जेतेले देखु छु 5 प्राइम एंड ता पेयर्ड रीजन रे सेटा पेयर्ड रीजन अच्छे कंप्लीट हेछि सनो गुडे ग्वानाइन प्रेजेंट बा इन साइटोसिन ओके द 5 प्राइम एंड दैट इज हैविंग द पेयर्ड रीजन 5 प्राइम एंड दैट इज हैविंग guanine paired with cytosine guanine paired with cytosine देखो इन guanine paired एक अछि बट 3 प्राइम एंड जे देखमा इन गोटे क्या रीजन अछि अनपेयर्ड रीजन अछि जगह पेयरिंग नहीं है देखि कहला अनपेयर्ड रीजन ओके 3 प्राइम एंड
having on paired region. Okay, and on paired region जन अच्छे सेना काना प्रेजेंट अच्छे C C A प्रेजेंट अच्छे याडू याडके जदी जिमा याडे एटा के 5 प्राइम एंड दला बले याडे 3 प्राइम एंड हवा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जदी जिमा बेले हमर काना अच्छे C C A प्रेजेंट अच्छे एंड हमर जन TRNA अच्छे जदी हमें स्ट्रक्चर देखमा मैं पहला ओवरऑल स्ट्रक्चर ई जगह रे काटी दोछ देखो हाउ इट इज लुकिंग okay this one that is the tRNA and tRNA ro इटा के कहला हमें एक्सेप्टर आर्म ओके एंड इटा हला हमर 5 प्राइम एंड इटा हला 3 प्राइम एंड इनर हला C C एंड 3 प्राइम एंड जेहेतु अच्छे बोले 3 प्राइम एंड रे हमर काना थिबा 3 प्राइम OH थे भाई जगह ओके तो एमिनो एसिड आसिकरी जते बोले एमिनो एसिड संगे tRNA बाइंड हबा एमिनो एसिड आसिकरी केनो बाइंड हेसी दैट इज इन दिस 3 प्राइम एंड ओके तो हमर तर 3 प्राइम एंड रे एमिनो एसिड बाइंड्स एट द 3 प्राइम OH of the acceptor ओके एक्सेप्टर आर्म रो 3 प्राइम एंड रे हमर एमिनो एसिड टा बाइंड हेसी दैट मींस tRNA रो 3 प्राइम OH एंड टा दैट इज एक्सेप्टिंग द एमिनो एसिड जेतु से एमिनो एसिड के एक्सेप्ट करू छे दैट्स व्हाट दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर आर्म रिसीव करू छे कहा के रिसीव करू छे एमिनो एसिड के रिसीव करू छे एमिनो एसिड के एक्सेप्ट करू छे सते लगे ताके हमें काना कहला एक्सेप्टर आर्म बोली ओके सो हमर tRNA रो एक्सेप्टर आर्म काना करू छे it accept the amino acid so that is called as receptor arm amino acid asikri ken arm re join hesi acceptor arm re join hesi acceptor arm ro ken end re join hesi 3 prime end re join hesi eta sor रखते बार के पड़वा राइट तापर देखो नेक्स्ट आर्म हला जस्ट एक्सेप्टर आर्म रो ऑपोजिट एंड देखमा इ एंड रे जन इटा गोटा आर्म अछि इ आर्म के कहा जेसी एंटीकोडन आर्म देखिए क्या आर्म कहे से एंटीकोडन आर्म ओके ये एंटीकोडन आर्म रे भी काना अछि गोटे पेयर्ड रीजन अछि दिस वन दैट इज द पेयर्ड रीजन ओके एनी पेयर्ड रीजन रे जे देखमा देयर इज अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर्ड रीजन रे केतना न्यूक्लियोटाइड्स अछि 5 टा न्यूक्लियोटाइड 5 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर अछि ओके 1 2 3 4 5 5 टा न्यूक्लियोटाइड रो पेयरिंग है 5 न्यूक्लियोटाइड्स रो बेस पेयरिंग है एंड तर गोटे लूप अछि दिस वन दैट इज द लूप जेंटा अनपेयर्ड रीजन अछि जेन अनपेयर्ड रीजन अच्छे ताकि कहला लूप एक्चुअली लूप रो मीनिंग देखमा जदी हमर हेयर पिन देखि तुम समझते जो माने लगा सन जने हेयर पिन के अंदर दिसते से ना तो इते के कह जेसी लूप हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर अछि त ओके तो इटा हला हमर काना दैट इज योर अनपेयर्ड रीजन ताकि कहला लूप एनी लूप रे काना इते से देखो लोअर साइड हमें जेते देखमा लूप रे इनो 3 टा न्यूक्लियोटाइड रो सीक्वेंस दिसी जहां के क्वेश्चन में काम लिखि सपोज धरि नियो गोटे सीक्वेंस है दैट इज UAC इस सीक्वेंस के कहा जैसे एंटीकोडन इते के काना कहा जैसे एंटीकोडन कहां ले जे कहमा देखो जेते बेला tRNA जाय करी mRNA रे बाइंड करूची mRNA इटा हला मन कर mRNA रे गोटे सीक्वेंस AUG
बेले इनके जिते बेले टीआरएनए आसुची इनके केन टीआरएनए आसवा जदि हमर इन धरिनियो इटा 3 प्राइम एंड हला इटा 5 प्राइम एंड हला इटा एयूजी इटा के कहसो में एमआरएनए रे जेन तीनटा न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस আছে ताके कहसो में कोडन इजा के टीआरएनए जेते आसवा टीआरएनए रो इनो इन अनपेयर्ड रीजन अछि इनो काना थिबा इ कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस थिबा कोडन रे जदी ए अछि बेले इनो काना थिबार कथा यू थिबार कथा इनो जदी यू अछि यू रो कॉम्प्लीमेंटरी की है ए जी जदी अछि जी रो कॉम्प्लीमेंटरी की है देखो ए रो कॉम्प्लीमेंटरी की है यू ओके यू रो कॉम्प्लीमेंटरी ए एंड जी रो कॉम्प्लीमेंटरी तमर नो कोडन जेंटा थिबा तर कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस केनो थिबार कथा टीआरएनए रे थिबार कथा एंड टीआरएनए रो जेन जागा रे अछि सेता के कहसो हमें काम बोली करी एंटी कोडन लूप ताके कहला हमें काम बोली करी एंटी कोडन कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस अछि जेहेतु कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस अछि ई जेन सीक्वेंस देखु छु दैट सीक्वेंस दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी टू कोडन कोडन संगे काने कॉम्प्लीमेंटरी है माने कोडन रो उल्टी है ए अच्छे बोले यू अच्छे बोले ए अच्छे जी अच्छे बोले सी अच्छे कोडन रो उल्टा है दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एंटी कोडन तते लगे ताकि हमें काना कहला एंटी कोडन बोली करी कहला ओके कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस केनो अच्छे टीआरएनए रे अच्छे दैट्स व्हाई टीआरएनए रे जन कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस अच्छे ताकि कहला हमें काम बोली करी एंटी कोडन कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस राइट सो दैट इजन लूप रहला ई लूप के कहि परम में एंटी कोडन लूप बोली करी ओके तो एंटीकोडन आर्म दैट इज जस्ट प्रेजेंट ऑपोजिट टू द एक्सेप्टर एंटीकोडन आर्म केनो प्रेजेंट अछि एंटीकोडन आर्म प्रेजेंट just opposite to acceptor arm okay it has a paired region okay जेनो कि हमर पाखा पाखी 5 base pairs present अछि okay then it has an unpaired region and that unpaired region having anticodons okay and that anticodon जेहेतु present अच्छे ताके कहला anticodon loop that's why that is called as anticodon loop बोली ओके मन कर धरिनियो हमर इ जगह रे इटा एमआरएनए ना मन कर एमआरएनए रे इनो गोटे सीक्वेंस अछि सपोज धरिनियो ए सी सी मन कर सीक्वेंस तो इ जगह के केन टीआरएनए आसबा जदि हमर टीआरएनए रे तार एंटीकोडन रे मन कर एसीसी अछि बोले एंटीकोडन रे इनो काना थिबार कथा ए रो कॉम्प्लीमेंटरी यू सी रो कॉम्प्लीमेंटरी जी सी रो कॉम्प्लीमेंटरी जी जदि हमर टीआरएनए रे यू जी जी थिबा बोले से टीआरएनए कहा के धरि करी आसबा एमिनो एसिड के धरि करी आसबा ई जगह के एसीसी जगह के ओके तो एवरी कोडन रो लागि गोटे एंटीकोडन काना अछि प्रेजेंट अछि केनो प्रेजेंट अछि एंटीकोडन दैट इज प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए बिकॉज़ टीआरएनए आसिकरी नो बाइंड हबा किछि टाइम रो लागि सो दैट कॉम्प्लीमेंटरी जदि बेस पेयरिंग नै हला बाइंड हे नै पारे से ततिर लागि बोली करी टीआरएनए पाखे काना अछि एंटीकोडन अछि ओके तो स्पेसिफिक एमिनो एसिड गोटे कोडन रो काम काना जे गोटे कोडन गोटे स्पेसिफिक एमिनो एसिड के कोड करसी इनो जदि एयूजी अच्छे बेले इ जगह के टीआरएनए एमिनो एसिड के धरि के आसबा बट केन एमिनो एसिड के धरि के आसबा मिथियोनाइन बोली गोटे एमिनो एसिड अछि इंपोर्टेंट वन बहुत सारा डिफरेंट टाइप रो एमिनो एसिड अछि जेले कि 20 डिफरेंट टाइप्स रो एमिनो एसिड अछि एंड 20 डिफरेंट टाइप रो एमिनो एसिड लागि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडन्स प्रेजेंट अछि डिस्कशन करमा डिफरेंट टाइप रो 61 कोडन्स अछि तार बाबद रे हम डिस्कशन करमा ओके बुझियला तो देखो इटा गला हमर काना दैट इज योर एंटीकोडन आर्म गला एंटीकोडन आर्म पर नेक्स्ट आर्म जतले हम देखुतला स्ट्रक्चर इस साइड के देखो इनो जन आर्म अछि ई आर्म के कहे से टी साइज सी आर्म
ओके टी साइ सी टी साइ सी टी रो माने हला थाइमिन टी रो माने हला का थाइमिन बट इना इता के थाइमिन के कहमा राइबोथाइमिन इता के कहमा राइबोथाइमिन साइ रो माने हला स्यूडो स्यूडो यूरिडिन एंड सी तो माने जानि छु समस्त साइट्रोस ओके एक्चुअली काना से देखो इजन आर्म अछि इनो तेरा पेयर्ड रीजन रहला एनी पेयर्ड रीजन रे 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर रहला चार पांचटा बेस पेयर्स प्रेजेंट अछि इनो ओके चार पांचटा बेस पेयर अछि एंड इजन अनपेयर्ड रीजन अछि ई अनपेयर्ड रीजन रे काना अछि द सीक्वेंस अछि टी साइ सी टी माने राइबोथाइमिन जनरली थाइमिन तो प्रेजेंट नहीं था ना आरएनए रे बट टीआरएनए रे थाइमिन देखबार के मिलसी सेटा के कहला में काम लिखि राइबोथाइमिन एंड गुटे फॉल्स यूरासिल देखबार के मिलसी नॉर्मली यूरासिल जन स्ट्रक्चर रहबार कथा तार स्ट्रक्चर रे किछि चेंज हे जेतिसी सेटा के कहसी सूडो यूरिडिन ओके और फॉल्स सूडो माने कना फॉल्स गुटे फॉल्स यूरासिल देखबार के मिलसी सेते लगे तके कहना सूडो यूरिडिन बोली करी कहला राइट तो इजन दुइटा देखला दीज आर नॉट द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स इवन नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स और नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस नुहन मन को कहमा अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस इमन को कहजो अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस ये अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस इन प्रेजेंट अछि दैट इज द टी साइ सी तते लगी ई आर्म के ना दला टी साइ सी आर्म बोली के ना and T साइ सी आर्म रो काम करना that is the site of attachment of one of the that is your हमर राइबोसोम जेतले हम राइबोसोम देखुछु राइबोसोम आसिकरी गोटे साइट रे बाइंड करसी एमआरएनए ऊपर देखो माने कर इटा एमआरएनए हला ई जाय के की आछे दिस वन दैट इज द टीआरएनए आसीचे ओके एंड ई जगह के असला की दैट इज योर राइबोसोम आसवा जेतो बेले इतार ऊपर बाइंड करबा जेतो राइबोसोम आसिकरी हमर इजन टी साइ सी आर्म अछि टी साइ सी आर्म रे राइबोसोम ता काना करसी बाइंड करसी ओके तो टीआरएनए राइबोसोम संगे जेन पॉइंट रे बाइंड अछि दैट इज द टी साइ सी आर्म रे राइबोसोम काना अछि अटैच अछि so that टी साइ सी आर्म के कहि परमा दैट इज द राइबोसोमल अटैचमेंट साइट बोली करी कहि परमा दिस वन दैट इज the site of attachment of ribosome डिस्कशन करमा इतर बाबद रे जते बेला में प्रोटीन सिंथेसिस बाबद रे पढ़मा प्रोटीन सिंथेसिस टाइम रे राइबोसोम आसिकरी टीआरएनए संगे गुटे पॉइंट रे जॉइंट हेते से पॉइंट रे अटैच हेते से सेकंड पॉइंट अटैच हेते दैट इज द टी साइ सी आर्म रे देखरी ओके तापरे असला हमर काना देखो तार ऑपोजिट रे आ गुटे आर्म अछि दिस वन दैट इज द डी HU आर्म ओके ई आर्म के कहू हमें काम लिखि DHU आर्म ओके एंड DHU आर्म रे भी गुटे पेयर्ड रीजन अछि गुटे अनपेयर्ड रीजन अछि पेयर्ड रीजन जी देखमा देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स इन अछि 3 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर ओके तीन चारटा न्यूक्लियोटाइड रो बेस पेयर अछि बट इनो गुटे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस इनो भी प्रेजेंट अछि से अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस रो ना हला DHU दैट इज डाइहाइड्रो यूरासिल ओके इतर पखे दुईटा एक्स्ट्रा हाइड्रोजन प्रेजेंट अछि यूरासिल रे दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रो यूरासिल बोली करी कहू दैट इज आल्सो अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस इटा भी काने गुटे अनयूजुअल नाइट्रोजनस दिस इज नॉट a normal nitrogenous base it is a normal nitrogenous base okay so इजन DHU आर्म अछि त DHU आर्म दबार ना कारण हला जे इजन लूप रहला ई लूप रे गुटे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस अनयूजुअल माने का दैट इज नॉट a normal nitrogenous base normal nitrogenous base काना ATGC और ATGCU adenine thymine guanine cytosine uracil ओके जस्ट यूरासिल रो स्ट्रक्चर चेंज हो गला दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस गुटे हला एग्जांपल डाइहाइड्रो यूरासिल इनो देखुतला राइबोथाइमिन थाइमिन टा प्रेजेंट अछि जदी आरएनए रे राइबोथाइमिन का ओके एंड स्यूडोयूरिडिन गुटे वन टाइप ऑफ फॉल्स यूरासिल दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड स्यूडोयूरिडिन बोली सेंता इनो DHU आर्म रे गुटे काना अछि अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस अछि दैट इज द नॉट ए नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस एंड इन DHU आर्म रो काम काना देखो
इतरे आसिकरी हमर सपोज इटा टीआरएनए हला सपोज इटा हमर टीआरएनए हला टीआरएनए रो डीएचओ आर्म रे आसिकरी बाइंड हे परसी किए गुटे हमर एंजाइम अछि okay suppose this one that is the enzyme ये एंजाइम रो ना हला एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम ओके एमिनो एसिल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम गोटे एंजाइम जे कि एक्चुअली हेल्प करसी जते बेले टीआरएनए टा एमिनो एसिड संगे बाइंड होउची एमिनो एसिड रो एक्टिवेशन रो लागि हेल्प करसी गोटे एंजाइम ओके से एंजाइम के कहसो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम एंड एमिनो एसिड के एक्टिवेट करासी और एमिनो एसिड के टीआरएनए संगे जॉइन कराबार लागि हेल्प करसी से एंजाइम के कहसो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम एंड इट बाइंड एट द DHU arm. DHU arm रे हमर के bind है amino acid tRNA synthesis enzyme that will attach at the T site arm. तब T site sorry DHU arm रे हमर that is the site of attachment of amino acid tRNA synthesis enzyme. Amino acid tRNA synthesis enzyme. Amino acid tRNA synthesis enzyme ta kenu bind ase that is bind at the DHU arm. Okay, site of attachment of ribosome kenta that is your T site arm. Site of attachment of codon kenta amarino codon asikri codon ra amari anticodon ta bind hoche and site of attachment of amino acid kenta that is your acceptor arm. तो आम जी टीआरएनए देखमा समस्त को से अडॉप्ट करी रखी ओके कि गुटे साइड रे की अटैच हो जाउची राइबोसोम आ गुटे साइड रे की अटैच हो जाउची एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम आ गुटे साइड रे की अटैच हो जाउची एमआरएनए अटैच हो जाउची आ गुटे साइड रे की अटैच हो जाउची एमिनो एसिड अटैच हो जाउची सो दैट एट इट इज अडॉप्टिंग एवरीवन सब आम जे देखमा सबुतरे की ना की जाई करी अटैच होचन सेते लगे टीआरएनए के कहसी एडॉप्टर मॉलिक्यूल ओके तर सब आर्म जे देखमा सब आर्म रे कहीं ना कहीं जाई करी काना होचन बाइंड करचन सेते लगे टीआरएनए के काना कहा जासी एडॉप्टर मॉलिक्यूल दिस इज कॉल्ड एज एडॉप्टर मॉलिक्यूल ओके बिकॉज़ गुटे एंड रे सपोज इटा एक्सेप्टर आर्म एमिनो एसिड ओके दिस वन दैट इज योर टी साइट आर्म हमारी जगह रे राइबोसोम दिस वन DHU लूप ई जगह रे के बाइंड हला दैट इज योर एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेटिक एंजाइम इटा anticodon टा बाइंड हला कहर संगे कोडन संगे बाइंड हला ओके तो सो दैट इट इज कॉल्ड एज व्हाट एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलिकरी कहू सबको अडॉप्ट करी रखी टीआरएनए टा ओके इटा गला हमर काना दैट इज योर DHU आर्म गला लास्ट हला हमर दिस वन दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल आर्म 5 नंबर आर्म दैट इज योर वेरिएबल आर्म देखो वेरिएबल आर्म जस्ट गुटे रीजन बाहर छे अनपेयर्ड रीजन टे बाहर छे दिस वेरिएबल आर्म दैट इज द अनपेयर्ड रीजन ओके अनपेयर्ड लूप फॉर्मेशन है इधर फंक्शन कना स्टिल दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन स्टिल अननोन proper function is still unknown okay so many biologists they are describing this in different way in different function but proper function that is not well known yet that's why that is still unknown बोलिकरी कहमा एबे and variable arm जे देखमा variable arm रे number of nucleotides vary करसी जे देखमा different tRNA रे different number of न्यूक्लियोटाइड्स रो बेस पेयर देखबार के मिलसे पाका पाके 3 to 21 नंबर्स ऑफ बेस पेयर देखबार वेरिएबल आर्म जे देखमा वेरिएबल आर्म देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स पाका पाके 3 रो 21 टा न्यूक्लियोटाइड्स तो देखबार के मिलसे दैट विल वेरी फ्रॉम that will vary from
tRNA to tRNA different tRNA रे different size of variable arm देख पार के मिले तो से बेसिस रे हमें काना कोला tRNA के दुईटा क्लास रे डिवाइड करा गला on the basis of variable arm on the basis of variable arm tRNA के हमें काना करछन दुईटा क्लास रे डिवाइड करछन टू क्लास ओके गुटे क्लास के कहूछ हमें क्लास 1 जन के 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स जदी थिबा 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स जदी थिबा इन वेरिएबल आर्म 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स थिबा जदी वेरिएबल आर्म रे बोले ताके कहमा क्लास 1 tRNA ये कहमा क्लास 1 tRNA ने क्वेश्चन ऐसे सोर रखि तो यदि 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स थिबा तो ताके कहमा क्लास 1 tRNA जदी हमर 5 to 21 sorry 5 नहीं that is 13 to 21 थिबा 13 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स जदी थिबा 13 to 21 nucleotides in variable arm रे 13 रो 21 टा न्यूक्लियोटाइड जदी थिबा त के कहमा क्लास 2 tRNA दुटा क्लास रे डिवाइड करला tRNA के ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द वेरिएबल आर्म रो लेंथ वेरी करूचे tRNA टू tRNA किछि तरह 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड्स होचे त किछि तरह 13 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स रहउचे 3 to 5 न्यूक्लियोटाइड जदी भितरे रहला ताके कहला क्लास 1 tRNA 13 to 21 न्यूक्लियोटाइड्स रहला त ताके कहला क्लास 2 tRNA बोली ओके तो इटा हला टोटल स्ट्रक्चर ऑफ योर tRNA रो टोटल स्ट्रक्चर वन बाय वन हमें डिस्कशन करला काना काना आर्म रहला पांचटा आर्म एक्सेप्टर आर्म दैट विल एक्सेप्ट द इम्यूनो एसिड एक्सेप्टर आर्म रे गुटे 5 प्राइम गुटे 3 प्राइम एंड रे CCA अनपेयर्ड रीजन रहला एंड 3 प्राइम एंड रे किया सिगरे बाइंड होचे दैट इज योर इम्यूनो एसिड सिगरे बाइंड होचे तर ऑपोजिट एंड रे के रहला एंटीकोडन आर्म रे गुटे पेयर्ड गुटे अनपेयर्ड रीजन रहला अनपेयर्ड रीजन रे काना रहला कोडन रो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस होचे दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोडन रहला राइट एंड टोटल टे के कहला में एंटीकोडन आर्म देन ई साइड रहला T साइड सी आर्म रे T साइड सी लूप रहला गुटे किछिटा अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस रहला राइबोथाइमिन रहला स्यूडोयूरिडिन रहला एंड दिस इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम इन आसिड राइबोसोम अटैच होचे देन DHU आर्म रे DHU लूप रहला जने कि डाइहाइड्रोयूरिडिन और यूरासिल अच्छे दैट इज आल्सो अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस जने कि आसिड की अटैच होचे दैट इज योर एमिनो एसिड tRNA सिंथेटिक एंजाइम आसिड अटैच होचे राइट तो जेहेतु so many different molecules different substances that are coming to bind with the tRNA it is adapting every type of substances समस्त को से allow करूचे bind करबार लगे तार सबु आर्म रे that's why tRNA के otherwise काना कहि पारुछन that is called your adapter molecule बोली करी एटा गला 2D structure of the tRNA बट हम जदि 3D structure देखमा 3D structure of the tRNA that was given by 3D structure भी जने देथिले that was given by a biologist ताकर ना हला किम बोली जने biologist देथिले 3D structure of the tRNA एटा हमें 2D structure देखला ओके तो 3D structure जन किम देथिले 3D structure that is just looking like inverted L shape केंदा दिसतला inverted L shape रो दिसुतला ओके L माने इन्वर्टेड L shape माने एंता टाइप रे दिसत ओके लेट्स सी केंदा दिसतला देखो पखा पखी ट्राई करमा ड्रॉ करबार लागे दिस वन दैट इज द 5 प्राइम एंड देखो इटा हला मोर 5 प्राइम एंड इटा हला 3 प्राइम एंड okay this one that is your inverted L value this na inverted L value this one that is the 3D structure of the tRNA that was given by your Kim 3D structure के देथिले के प्रपोज करथिले ऐसे that is your Kim okay एटा गुटे हमर लूप है that is your T size C loop हला and this one that is your DHU loop हला this one that is your anticodon loop हला this one that is your acceptor ओके गोटे साइड हला हमर काना दैट इज योर एक्सेप्टर आर्म गोटे हला T साइज C आ गोटे हला DHU आ गोटे हला एंटीकोडन
ओके इटा 3D स्ट्रक्चर है देखिए हम सब आडू जदी देखमा एनिमेटेड स्ट्रक्चर टा देखमा नेक्स्ट क्लास रे देखे देबे तुमको तार एनिमेटेड स्ट्रक्चर और तुम्हें गूगल रे सर्च मारी कर यू कैन सी दिस ओके दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA that was given by Kim. So this is all about the tRNA. Okay, and in the next class we'll start from some other new concept. Okay, किसी concept अच्छे cut curve काना denaturation काना renaturation काना तार बाबत हमें discussion करमा in the next class रे. Thank you. I think you all enjoyed this session. If any doubt, you can write to us. Our chat box is open for all of you in the Apprize application.